you? So, very good evening to all of you. So, I would like to thanks to the Dr. Mukesh sir to giving me the opportunity to interact with you a very important topic of your research, the exploratory data analysis. I think you have studied till now. This is the your more than half the lead till now because now last session of the third day, so you have remaining only 2 days for the understanding the more concept about the statistics. But in the last 2 days, including today, you have studied the basic requirements for your basic needs, which is very useful for your research to conduct any important to conduct any qualitative research actually. But in that, I think in the yesterday's lecture, Dr. S. N. Kwan exactly told you about the data exploratory data analysis. With the before the just before session, Dr. Roni have taken the session on the data visualization. So you have the idea what are these, what or why these topics are very important. Why the data visualization, why the data analysis is important. And I think that you are here because only of the due to the importance of these topics here. So I think I have shared one data file, and that data file is with you all. I have. So I will just demonstrate the thing. You can repeat or you can ask at any point of time to me if you have any query. Okay. So online participants also can send the message at any point of time if you have any query, whether my voice is not audible to you or I think you also have the data. So you can send the message and I can tell you what is your, I can try to solve your query actually. So for this, I'm going to start my, I'm opening to my data set. Just this data set that is shared with you all is in the SPSS file already. Because I hope in the first two lectures, that was based on the SPSS, they have given you the idea of how to import the data set from the Excel or some other data files actually. So this data set is in the already in the SPSS. So I am not taking so much time on describing how to import the data set, what are the characteristics of a particular variable view or basic structure of the SPSS. Just I am opening directly this data set, or I think you can also open simultaneously this data set. But before doing anything, basically now you can understand that we have this data set. This data set is a kind of primary data set or secondary? Primary or secondary? Primary. What do you mean by the primary data? Whether this data is collected by you, then how can it be primary? It is a secondary data. The problem with the secondary data set is that we don't have actually the real objectives, or that means on the basis of this data set, just we need to decide our objective. अपने ऑब्जेक्टिव्स हम इस डेटा सेट पे फुलफिल नहीं कर सकते. जो ऑब्जेक्टिव किस तरीके के बन सकते हैं हमारे, या किन चीजों को हम किस चीज को हम अपना ऑब्जेक्टिव बनाए, किस तरीके के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट. तरीके की प्रॉब्लम होती है. डेटा दो तरीके से कलेक्ट जनरली किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी डेटा हमारा अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उसके हिसाब से मतलब क्वेश्चनर बनाते हैं एंड इन द बेसिस ऑफ दैट वी कलेक्ट द डेटा. वो सारी टेक्निक्स आप लोगों ने, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. सेकंड थिंग इज दैट फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस or some more for the advanced, some other type of research also, we can use the secondary data. Nowadays, we have a lots of secondary data available in the online platforms. There are various online platforms like Kaggle and etc. Some government sites is also there. That means we can just download that data, and most of the data set that you can download is it in the Excel format. Somewhere it is in the PDF format. The PDF can also be easily converted into the Excel. So finally, actually, we have the data in the Excel format. Either it is a primary or it is secondary data. Now we have the secondary data. इस secondary data को यदि आप देख रहे हैं, तो just see the names of the variables.
बिकॉज हमारे पास पहले जब से सबसे पहली चीज first, because this data is not our data actually. We have not collected this. So first we try to understand what is this particular data and what kind of analysis we can do so that as per your data, as per your objective, as per your requirement, you can use statistical tools. You can decide which particular tools we can use. Is it clear to all of you? So just try to understand what is this particular data, one particular data this is. So first is the ID. So ID is a kind of useless thing as with respect to the analysis actually. These are part of your data set, but for the analysis purpose, there is no use of this ID variable. Let's come to the second. It is the length. The length of variable. That means from this line, you can understand that this data is related to this particular data is related to children or just baby or just baby actually. Not children, that is baby actually. So that means they have given the length of the baby. In the second variable, third actually, birth date. What is the weight at the time of birth of a particular baby? Then head the name of the variable, but that variable is defining the head circumference. Head circumference. Just the head circumference. And then we have smoker, the next variable. So this is about the smoke. Smoke baby to karega nahi. So this is whether a mother smoke or no. So that means it is a kind of, I think Rajiv Pandey sir has told you about the structure, that means the measurement scale of the variables. When you are going to collect the data on the smoke, so that means always we have the two options, yes and no. And it is up to you whether you are using, whether you are giving a number one for the yes or number two for the yes. It doesn't matter. Or 0, 1 or 1, 2, anything you can do. Just they are the code. Okay. So in this case, we have given 0 for the non-smoker and 1 for the smoker. Is it clear? So then we will have also just see the uh, scale measurement of all the variables, and just you can see here that about this particular variable, all of the variables which we have entered on the scale. Scale means they can be on the ratio scale or they can be on the interval scale. As per this data set, these variables are based on interval or I am talking about the second, third, and fourth variable. We are writing the scale. We have only three options. So basically, we measure the variable on four scales: nominal, ordinal, interval, and ratio. So in spaces, we mix interval and ratio in a one actually. But actually, a particular variable, that means the length, birth rate, or head surface is measured on basically either by the interval scale or ratio scale. The scale is fine. Basically, they have only three options. So it is we have measured, we should measure these three particular variables by using interval scale or ratio scale. Interval. Sir is saying interval. Who is in favor of the interval scale? One. You also two. Anyone else? More two plus two, four. One hand is over there, five. Can you give me one reason why you are saying this particular these particular variables we should do actually measure on the interval scale? Can you give any one example? That means we have the absolute zero in all the variables. Zero length means zero length means nothing. Zero birth weight means nothing. Zero head circumferences means nothing. That means zero is present there. If zero is present there, yeah, that means if there is no meaning of zero,
Zero means nothing actually. That means variable is measured on ratio. Is it clear? When zero means nothing actually. Zero means nothing, ratio. If zero means something, if I am saying that the temperature is 0 degree centigrade, which means there is no temperature. That means there is too cold. When you have something, when you have some meaning with zero, it means interval, and when there is no meaning with zero, that is ratio. This is clear cut differentiate between interval and ratio. So smoker is a nominal scale. M age is the mother's age. M number of cigarettes, mother number of cigarettes. M height, mother height. S age, mother age. F N F number of cigarette, F number F N O C I G means F father number of cigarette, father height, low weight. Just you can see this low weight is again on yes and no. Whether the weight is low or no. So zero means no and one means yes. And just you want to have one more variable which we have converted into this variable actually. Mother age. If mother age is greater than 35, then we are saying what? That is yes. If mother age is less than 35, then we are saying zero. That means no. Okay. Mother age, whether mother age is greater than 35 or less than 35. So yes and no. Is any doubt with this data set? So what kind of analysis you can do in this data set? एज को कन्वर्ट बस हमने कुछ पर्टिकुलर चीजें देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकते हैं कि मदर की एज ग्रेटर देन 35। ये कोई क्लियर कट ये नहीं है, बस सेकेंडरी है, लेकिन सेकेंडरी को आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि इज देयर एनी चांस कि मदर एज 35 होने और ना होने से कुछ स्मोक के साथ कोई रिलेशनशिप हो, बर्थ वेट के साथ कोई रिलेशनशिप हो, for that matter actually. Okay. So what kind of hypothesis you can do? You can actually generate or you can basically produce from this particular data set. What kind of hypothesis? क्या क्या hypothesis आपकी हो सकती हैं? Online participant can also message. किस तरीके की हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं? अब हाइपोथेसिस से आपके दिन से बहुत लेक्चर्स आपके हो गए हैं कि हाइपोथेसिस डेवलप करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी का रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिसाइड करेंगे। ये डेटा सेट है। इस डेटा सेट से आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और क्या आपकी हाइपोथेसिस हो सकती है। उसके बाद फिर उनको कंप्लीट कैसे करना, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना, चेक कैसे करना, या उस एनालिसिस को कंप्लीट कैसे करना, दैट इज द सेकंड थिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माय पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ताकि ऑब्जेक्टिव सब आपके हो सकते हैं, जस्ट टेल मी फ्यू एक्चुअली, बहुत सारे होंगे यहाँ से ऑब्वियसली, पर दो तीन चार आप लोग बता देंगे तो दैट विल बी फॉर मी। थोड़ा लाउडली बोलिए। ओके फाइन, ठीक है, उनका सुन गया। और कोई बोलिए सर, ताकि एनालिसिस हम सोच सकते हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया स्टैटिस्टिक्स का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आइडिया आप लोगों को नहीं है ना। और आप तो छोड़ दीजिए, अब आपके पास डेटा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का अच्छा खासा कंसेप्ट अब आपके पास है, एब्जेक्टिव्स कैसे बनाने, आइडेंटिफिकेशन कैसे करने। मैं तो जस्ट मैंने लेक्चर्स ज्यादा नहीं सुने, बट ऑन द बेसिस ऑफ योर शेड्यूल आई एम टॉकिंग टू यू। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना, प्रॉब्लम का हाइपोथेसिस कैसे बनानी है, विजुअलाइजेशन के लिए भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम क्या क्या ग्राफ यहाँ से बना सकते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन पहली बात है कि हमें करना क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। सर एक तो सर फादर की हाइट का, मदर की हाइट का, क्या बेबी की लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्टिव ये ले सकते हैं हम लोग? क्या उनकी स्मोकिंग का बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है? चलिए हाँ ठीक है, क्या उनकी स्मोकिंग का बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल बेबी हेल्थ देख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके का ऑब्जेक्टिव सर। आप तो बहुत लास्ट के दिन पहुंच गए सीधा, अभी शुरू में बताइए कुछ और कुछ, या प्लीज।
जो पेरेंट्स स्मोकर हैं, जो पेरेंट्स नॉन स्मोकर हैं, मतलब मदर नॉन, उनके बेबी के हेल्थ के सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस हो सकता है। एवरेज हाँ बेस आई नो कह रहे हो आप, यस कि उनका एवरेज देख सकते हैं कि जो स्मोकर मदर्स हैं उनका बेबी और जो नॉन स्मोकर मदर्स है उनके बेबी के हेल्थ एवरेज, एवरेज हेल्थ सर्कमस्टेंसेस में कितना डिफरेंस है, दैट इज गुड। और कुछ बेबी वेट देख सकते हैं कि एवरेज बेबी वेट कितना है, या अगेन आपने that is again a very very complicated, little bit complicated, not too much, but okay. Now, I just want to tell you now. Just go very one by one actually. We are talking about the length. Okay. So first thing that comes into your mind, what we can do, what we can just develop a particular hypothesis based on the length. Just go one variable by variable, क्योंकि हमारा डेटा नहीं है, हमारा डेटा होता, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते तो हम अपना खटाखट बना डालते सारे। लेकिन क्या हम वेरिएबल वाइज वन बाय वन कुछ हाइपोथेसिस बना करके देखते हैं, उसमें से देखते हैं कि कितनी हमारी ठीक है, या कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि कितने हमारे सही है, फिर उसके बाद हमारी ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें से फिर हम कुछ जो हमें लगेंगे चलो इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट वी कैन गो, जस्ट वी कैन अवॉइड इट। तो जस्ट फर्स्ट make a long list based on particular on the all the variables, and then just after that making the complete list, just try to avoid the kind of useless things, kind of less important type of objectives, and just make a comprehensive list of your objectives, and then based on those objectives, just do for the analysis. Just think about the first variable, that is the length, length of the baby. What is the first thing which comes in your mind? What is the average length of the baby? Is it a simple question? What is the average in general? If you talk about what is the average age of the persons who is living in the India? It is a big question. जितने लोग जीवित हैं इंडिया में उनकी एवरेज हाइट, एवरेज एज क्या है? अदर कंट्रीज की एवरेज एज क्या है? जैसे आजकल हम कॉम्पीट करते हैं कि चाइना की एवरेज एज ज्यादा है, हम लोग की एवरेज एज कम है। एक बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट लेंथ हम देख सकते हैं, पहली ऑब्जेक्टिव हमारा बन सकता है व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द बेबी, या उस एवरेज लेंथ को हम डिसाइड कर सकते हैं एवरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए बेबी की, कितनी होनी चाहिए। तो ये मुझे भी देखना होगा कि ये लेंथ दी किस में है। आई थिंक इज इट इन द सेंटीमीटर ना, 40 50 60, आई थिंक दिस इज द सेंटीमीटर। तो कितना मान लें हम लोग एवरेज, मतलब जो आपको एक आइडिया आता है कि एवरेज एवरेज लेंथ बेबी कितनी होनी चाहिए, 50 मान लेते हैं। तो क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि जो ये डेटा हमें मिला है कि एवरेज लेंथ 50 है कि नहीं है? क्या पहले हम सबसे पहले तो यही चेक कर लें कि एवरेज लेंथ हमारी कितनी है। सेकंड, उस एवरेज लेंथ को हम टेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को, किसी भी पर्टिकुलर assumption के रेस्पेक्ट में, एवरेज लेंथ इस पर्टिकुलर डेटा सेट की 50 है कि नहीं, या किसी और नंबर के साथ, डजंट मैटर कि जस्ट ओनली वी गो विद द 50। सेकंड, बर्थ वेट इन एलबीएस दिया हुआ है कितना, एवरेज, अगेन द सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ थिंग्स। देन गो टू द थर्ड वन, अगेन द सेम थिंग, हेड सर्कमफ्रेंसेस देख सकते हैं। तो यहाँ तक तीनों क्वेश्चन की ऑलमोस्ट सेम थिंग है हमारे, तीनों का एवरेज देख सकते हैं। पर्टिकुलर जो हमें जनरल हमारी हाइपोथेसिस कह लीजिए, जनरल हमारा जो एक स्टेटमेंट है कि एवरेज लेंथ या एवरेज वेट या एवरेज हेड सर्कमफ्रेंसेस उतना होना चाहिए, उसके लिए हम टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। दैट इज द वन थिंग। सेकंड थिंग, नाउ कम्स टू द मेन वेरिएबल, कम्स टू द पिक्चर, दैट इज स्मोक। मदर smokes or not? Okay, mother does smoke or not? Now we can go with the on the with all the variables. जो मदर स्मोक करते हैं और जो नहीं करते हैं उनके बेबी लेंथ की
क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या एवरेज है, और सिर्फ एवरेज ही क्यों, वी हैव अ सेवरल काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, skewness, kurtosis. What's the role of these things actually? Why you want to calculate the standard deviation? Why you want to calculate the variance? Why you want to calculate skewness or kurtosis? Just think about the title of your workshop particular lecture. Exploratory data analysis. Just you want to explorate or just you want to explore the things which is hidden, maybe or may not be clearly seen, which are in a particular data set or a particular variable. You don't have the idea what is the average is. You don't have the idea what is the skewness of this data set, what is the kurtosis, what is the variance, what is the standardization, what is the range, maximum minus minimum, what is the minimum length, what is the maximum length. So just you want to explore the things. Just you want to know more about the particular variable. Just I want to ask one question. I have not asked at the starting, but just I am trying to connect that particular. सबसे पहले जनरली आप लोगों की, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका हो चुका है कि ज्यादातर टीचर्स ने क्या पूछा होगा, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ योर, किस किस सब्जेक्ट से हैं, पूछा जाता है। शायद मैं परसों लेक्चर में था, मैडम के तो उन्होंने पूछा भी था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कितने हैं, इस सब्जेक्ट से कितने हैं, क्यों पूछा जा रहा है वो, उसका स्टडी से कोई फर्क पड़ता है, मतलब मेरी टीचिंग से उसको कोई लेना देना है, so that I can deliver the things as per your level or as per your understanding. But first I try to understand what are you actually. आपको स्टैटिस्टिक्स की कितनी जानकारी है, कितना पढ़ा हुआ है, कितनी सारी चीजें आपको आइडिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो किस तरीके से लग जाएगा। यदि मैं पूछ लूं कि आपकी पुरानी क्लासेस क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज आए हैं, किस जगह से पढ़ करके आए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन डिसाइड कि आपको स्टैटिस्टिक्स का कितना आइडिया हो, कर सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा। जस्ट आई वांट टू नो मोर एंड मोर। तीन चार चीजों से आइडिया लग सकता है, कौन सा कोर्स क्या है, किस जगह से किया है, उसमें फिर एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा हुआ है, कौन कौन से पेपर पढ़े हुए हैं, पेपर को डेप्थ में ले जाए तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो सेम थिंग इज विद दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। बट वी कैन जस्ट गो फॉर द मेन, बट मेन से तो सारा काम नहीं चलेगा। मैं आपका नाम पूछूं तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या पढ़ के आए, सिर्फ नाम जानने से कुछ हो जाएगा। तो मीन जस्ट वेरी वेरी सिंपल थिंग के बारे में और ज्यादा जानने के लिए मुझे आपको और चीजों के आपके बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि आपका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस वर्कशॉप को अटेंड करने के। तो सेम थिंग इज देयर, ऑब्जेक्टिव जब आएगा जब आपकी अपनी इस पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में जब हम बात करेंगे कि इसका हमें एनालिसिस में क्या करना है, दैट विल बी डायरेक्टली कनेक्ट विद योर ऑब्जेक्टिव। करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, वी हैव नो नीड टू डू ऑल द थिंग्स। आज के एस्पेक्ट पे मैं आपको आज में लेक्चर दे रहा हूँ, I'm talking about a particular lecture, just I will ask about you the what is the background regarding the statistics. If some other person comes and he is supposed to deliver the lecture on the basis of the research methodology or some report writing techniques, then he will ask you about the कि कितना आइडिया रिसर्च मेथोडोलॉजी का, कितने टाइप की रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, कितने तरीके की रिसर्च डिजाइन है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर से जिससे रिपोर्ट राइटिंग की जा सकती है। ही विल आस्क, तो दैट मींस क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव अलग हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव अलग हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब कि हमें सारी चीजें यूजलेस है। क्या करना है, जस्ट वी नीड टू टेक ओनली इंपॉर्टेंट, बट नथिंग इज अनइम्पोर्टेंट, नथिंग इज अनइम्पोर्टेंट, बट उन अनइम्पोर्टेंट में से हमें ये रखना है, देखना है कि क्या क्या चीजें उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जुड़ रही है। मेरा क्वेश्चन क्लियर है। मैं एनालिसिस की बात करूं तो मैंने स्टैटिस्टिक्स की बात पूछी, क्वेश्चंस आपके उसके बारे में पूछेंगे। जब मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करूं तो फिर मैं रिसर्च बैकग्राउंड
The same thing is here. You have to first say what is the variables, what kind of variables you have, whether your data is primary or whether data is scale. Doesn't matter. That is the first. Second thing, go to the objectives directly. In this case, we need to decide what are the objectives. If you have the secondary data, if you have the primary, then there's no point in directly the objectives. How to connect the objectives? How basically we are what how we can solve these objectives. Is it my point is clear to all of? So on the basis of the same thing, we can go for the father's related variables. Is it clear? So first thing, just we are going with this. This is the very important tab in statistics in SPSS. I think you have been told about this tab actually. Analyze. In analyze, just go to the second option. Descriptive statistics. Descriptive statistics. In descriptive statistics, just click on frequencies. Frequencies. Just as you click on the frequency, then you will see there is this kind of dialog box. Can we put all the variables in the dialog box? If we are going for the frequency, can we put? Or can we select some only? Some. I just want to know which particular variable or variables we can put here actually. If you are going for the frequency. Going for the frequency. Which variable? If you are going the frequency, then just we will use only the nominal variables. If we are talking about the frequency, then just we will talk about the nominal variables. Which variables are nominal is sometimes variables. Suppose you have the data on the Likert scale 1, 2, 3, 4, 5. Then you want to know how many times so number one is repeated actually. One is the basically the highly unsatisfactory, satisfactory, neutral, very satisfactory, and highly satisfactory and highly dissatisfactory. In any order you can do. Unless you can give the one number 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So on the basis of that, you want to know out of 100 persons, how many give the grade 1, that is very satisfied, 2 कम satisfied, 3 neutral, 4 dissatisfied, 5 बहुत ज्यादा dissatisfied. आउट ऑफ 100 है जितना भी आपका ग्रुप है उसमें से कितने satisfied है, कितने ज्यादा satisfied है, कम satisfied है, neutral है. So in that case, what you can do, you can go for the frequencies. In some other sense, if you have the nominal value, right, it's more in this particular case, you want to know that in this data set, what is the total number of variables, total number of observations. Out of that, how many do smoke and how many do not smoke? Is it clear? So just I am using the one at a particular time, but you can use also more time. Doesn't matter. In statistics, can we use? So point is clear. We are using nominal variable here. We have selected a nominal variable. Now come to this point. Statistics. Can we use any kind of statistics from here if we have the variable on nominal scale? Can we use any statistics? Can we use any statistics from here? Variable is nominal. Point to be very clearly noted. Can we use? No. Why? Because if you are selecting the nominal variable, then this kind of statistic cannot be calculated, or we should not calculate any statistic. Is it clear? So just we cancel it and directly just see this dialog box check actually. By default it is checked, but once you can check it and just click on OK. So in this case, you can see that we have the total
42 valid observations and there is no missing observations. And in this case, out of 22, we have 20 non-smoker and 20 non-smoker and 20 smoker. Is it clear? But here you can see that we have two things. One is the percent and the other one is the valid percent. So what do you mean by the percent and valid percent? In this case, both are same. Is there any difference in valid percent and percent? Because we are getting same and there is no issue. But if you have some missing observation in your data set, then you will see that there is a difference between percent and valid percent. Percent will include all the observations. That means it will also include the missing observation. And valid percent exclude the missing observation. And one property definitely told by the Professor Pandey sir to you. SPSS is a very smart software and deal with the missing observations. So by default, it will give you the both the result. I can just see you the one result. You have no need to replicate it. Smoke, just I am removing this particular observation. Let me know it is one. Just now, if I remove it, then you can see we have a dot over here. And just I go to the analyze, descriptive. You can see y variable is already selected and just click it. Now you can see we have the valid 41, missing 1. In this case, now you can see the 100% is including the missing observation and valid percent is giving the 100% based on without including the missing observation. So what should you report actually? Percent or valid percent? Or both? Just you need to copy, go to the Word file and just paste this over there. This one. And just you need to remove this particular variable, entire column, and all these things also. You can also remove this. This table should report by weight. Either कंप्लीट मैंने बहुत जगहों पर देखा है जो स्पेसेस का आउटपुट आया उसको उठाएंगे रिपोर्ट में पेस्ट करते हैं उतने की जरूरत नहीं है जितने की जरूरत है यदि वैलिड यहाँ पर भी वैलिड कुछ नहीं है जस्ट गिव द परसेंट हो क्योंकि मुझे वैलिड नॉट वैलिड किसके हिसाब से है दैट इज बिकॉज ऑफ एसपीएस बट फॉर अ लेमन पर्सन और फॉर एनी पर्सन देयर इज अ नो रोल वैलिड पर्सन एंड नॉट वैलिड पर्सन देयर इज अ वन थिंग एक्सिस्ट ओनली दैट इज द पर्सन in the distinguish with the SPSS, basically the SPSS is very smart. It performs and this is what things with the missing and without. We should report only this type of table. There is no need of this first column also. Do this. Is it clear to all of you? And above we can give the title of the table and all these things. This is all. I again putting one here because otherwise my data will be disturbed. So go to this one. Now I am removing this from here and just click on the line and put or drag this particular variable into this dialog box and go to the statistics. Now I can use all the statistics because length is measured on ratio scale of measured on scale variable. So we have entered the length on the scale variable. So measure and scale. In statistics, we can calculate mean, we can calculate median, mode, sum, standard deviation, variance, range, minimum, maximum, standard error. I will come later on all the variables on the statistics actually. Or you can use more than one variable at a particular time. We continue or just we can use more than one variable at a particular time. Is it clear? Just click on the all variables or all the statistics.
ऑन क्यों कह रहा हूं मैं अभी अभी मैं ऑन कह रहा हूँ, बट इट इज नॉट ऑलवेज भी नेसेसरी कि सभी आपको सभी जगह रिपोर्ट करना है. डिपेंड्स अगेन योर ऑब्जेक्टिव कि आपको करना क्या है. All the statistics, measure of all the central tendency, measure of all the dispersions, and characterizing the posterior distribution. तो मैंने सारे क्वेश्चन पूछ डाले आपसे, क्या क्या, कहाँ से आ रहे हो, कितनी दूर घर है, कौन सी क्लास अटेंड किया, कितने पेपर है ना, कौन कौन सी क्लास में कितने मार्क्स आए, स्टैटिस्टिक्स में फेल होकर के तो नहीं आए हो, पास हो गए तो कितने अच्छे मार्क्स से पास होकर आए हो, कौन सी किताब पढ़ के आए हो, सब कुछ एक्सप्लोर कर दिया है. Then click on continue and then again continue. One mistake I have do here. What? This one. If you are using the nominal and if you are using the scale variable, then you should uncheck this display frequency tables. Because for the scale variable, we should not report or we should not calculate the frequency. It's change variable to variable. If you have the nominal, then we just only report the frequency table. If you have the scale variable, then we have no need to report the, and we should not report the this frequency table. Is it clear? So we will uncheck first display frequency table, then click on OK. In this case, just see over here, we have the two things, two columns here, length of the baby and weight of weight. So I will explain only the one. So similarly, you can think about the second one. Is it clear? So there in the both the variables, we have the 42 observations. That means there is no missing observation in this data set. Is it clear? And just think, what is the mean of the first? The mean of the first variable, that is the average length reported by 51.8. Average length for this particular variable is reported by 51.33. Standard error of mean. What do you mean by the standard error? I will explain later on actually. Standard error. Median. What is median? What is median? Middlemost value of the data. First, we need to arrange the data either in the ascending order or descending order. Then the middlemost value will be the median. If the number of observations are odd, then exactly the middle value. If number of observations are even, then the average of median value. So what is the importance? What are the advantages to calculate the median rather than mean? You are just using middle two values, calculating or just only the middle one value. Calculate whether you are going to calculate the median. If you have the even number of observations, then the average of the middle. If you have the odd number of observations, then exactly the middlemost value will be the median. Is it clear? So, if some outliers are present in your data. Only ma'am, I think also told you about it when he was performing the box plot about the outliers, and definitely Rajiv Pandas has told you about the outliers. Okay. If you have any outliers, the outliers will always be either on the lower side or on the upper side. It will not be in the middle section. You will have median or more outlier will always be either on the lower side or the upper side of the data set. Is it clear? So, if you have some outlier in your data, in that case, rather reporting the mean, you should report the mean. Because median is not affected by the outlier. Why? Because mean is based on all the observations. When you are calculating the mean, it is the sum of the all observations divided by the number of observations. So it is based on all the observations. While median is based on only either one or two observations. Is it clear? Mode is the highest frequency value.
which particular value is repeating most of the time in a particular data set. So in this case, it is 53. Standard deviation, square root of variance. What is the requirement to calculate the standard deviation or variance? When we have the mean or median or mode, जब हमारे पास मीन मीडियन या मोड है, उसके बावजूद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? हम ये चेक करना चाह रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, कि मीन से हमारी ऑब्जर्वेशन कितना कितना दूर है। जितना वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, तो दैट मींस ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर वेरी क्लोज टू डिफरेंस कम। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है वेरिएंस का, 1 अपॉन n समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर। को याद रखने की जरूरत भी नहीं है आप लोग। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होती है? Standard deviation of this data set divided by square root of number of observations. Standard deviation divided by square root of number of observations. कितनी observations है इस data set में? कितनी observations है? 42. जो standard deviation आपका आया 2.936 divided by square root of 42, that will be the standard error of. Is it clear? हर जो भी statistics आप कैलकुलेट कर रहे हैं, whether you are calculating the mean, you are calculating the skewness, you are calculating the kurtosis, so all things you will always have the standard error. Why? Or what is the meaning of the standard error? Standard error, it comes basically from, suppose you have in this classroom we have the 100 students. This is the population. Okay. Regarding the one particular variable, that is the score of your marks or your age or your IQ level, your hemoglobin, your anything actually. On the one variable, I have collected the one data set. That data set is suppose collected by the Ansika. Out of 100, we selected the 30. Okay. We will calculate the mean. Then again I give you YP. Just again calculate the mean of the. Just again select the 30 participants out of 100 again and calculate the mean. Is it clear? Then I ask Rajat to calculate, again repeat the same thing. Similarly, what we have actually now, we have one x bar due to Ansika, x bar due to YP, x bar due to Rajat, and so on actually. If you calculate the standard deviation of this mean data set, it is called the standard, which means standard error is the standard deviation of that statistic. So first वो statistic calculate कर लो and then calculate the standard deviation based on that statistics, which is called standard error of statistic. अब वो statistic क्या हो सकता है? That may be your mean, that statistic may be your skewness, or that statistic may be your kurtosis or some other statistics too. Is it clear? When I am saying statistic, which means that statistics means which is the combination or which is the function of the sample observations. Okay? And variance skewness talks about the departure from the symmetry. Departure from the symmetry. In this case, departure from the symmetry means whether your data in a normal, in a well shape or not, whether a shape of a particular variable is well or not. Well मतलब जैसे घंटा होता है ना, टाइप का है या नहीं है, इस तरीके से, ठीक? या in other sense we can say that normal form. Whether your data is in a normal shape or not, just we want to know that. We have a several tests also, we have a several ways also to test to check a particular data set, whether a particular data set is normal or not. But this is the one thing, skewness. Basically, skewness means departure from the symmetry. Departure from the symmetry, which means if the value as per x-axis is 0, it means data is symmetric. If value is 0, which means data is symmetric. Is it clear?
but if value is not zero, so it can be positive or it can be negative. जीरो नहीं है तो क्या दो ही केस बनेंगे, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। फाउंडेशन कुछ नहीं है कि वो हमारी इंटीजर होगी, डेसिमल में होगी, इधर को कुछ भी हो सकती है, रियल लाइन की ऑब्जर्वेशन है, बट जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो दैट मींस इट इज डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री। इफ इट इज जीरो इट इज सिमेट्री, इफ इट इज नॉट जीरो देन इट इज डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री। सिमेट्री से वो अलग जाता है। ठीक, इसके बाद क्या है, नेगेटिव है देन वी विल से इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। डिपार्चर नहीं है तो देन वी विल से इट इज स्क्यूड। तो स्क्यूड कैसा होगा, दो तरीके का, नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड। if this statistic skewness value is positive then we will say it is positively skewed. If this statistic value is negative then we will say negatively skewed. Is it clear? आसान से बता। Now in this case you can see that in a first case the statistic value is minus 0.248 minus 0.248, and in the second one the value is minus 0.056. What is your opinion regarding the symmetry? Both the variables are symmetric. Both the variables are departing from the symmetry. In your opinion, one value is minus 0.248 and other one is minus 0.056. सिमेट्री क्या हो गए, मतलब पॉजिटिव का तो खेल ही खत्म हो गया, तो नेगेटिव स्क्यूड क्या होगा या फिर सिमेट्री क्या होगी, तो बताओ क्या है। एक वैल्यू 0.2 है और इसी में मान लीजिए कि तीसरा वेरिएबल मैंने लिया, सपोज इन दैट केस द वैल्यू इज माइनस 3.5 minus 3.5. Just remember that value. Suppose we also have a one more column, and in that column the skewness value is minus 3.5. So just let me know what will be your conclusion. All the variables are symmetric or negatively skewed, or for some variables weight is a symmetry. Can we consider weight as a symmetry? So length as a symmetry? कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ कि लेंथ सिमेट्री। एक तो आ जाए यार कम से कम, हमारे साथ एक भी नहीं आ रहा है। दोनों के लिए मना कर रहे हैं कि दूसरे के साथ कुछ है, वेट के साथ कोई है जो सिमेट्रिक कह रहा है या वेट भी नॉट सिमेट्रिक है। यही से स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली अपनी जो रोल स्टैटिस्टिक्स का शुरू होता है वो यहाँ से होता है। फर्स्ट तब क्या हुआ, हम दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप कह रहे हो कि सिमेट्रिक नहीं है और मैं कह रहा हूं सिमेट्रिक है, कैसे डिसाइड करें भाई। और सपोज आई एम द सुपरवाइजर ऑफ यू, देन डेफिनेटली नो सिमेट्रिक, डेफिनेटली सिमेट्रिक है फिर तो ना। यदि सुपरवाइजर ने कह दिया कि सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली सिमेट्रिक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिमेट्रिक नहीं है, तो अपना क्या स्टैंड है, सोल्यूशन क्या है। भाई सही तो कहा जाएगा, ये थोड़ा कि एक पर्सन कह रहा तो वो सही है, दूसरा कह रहा तो वो गलत है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स टेक ऑन टेस्ट। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में देयर इज नो मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर। जब भी आपके पास कोई भी एब्सोल्यूट नंबर होगा उसका कोई मतलब नहीं है कभी भी, वो नंबर चाहे कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इन सम केसेस यू विल फाइंड दैट when your skewness value is minus 3.5, that may be the metric, but if the value is minus 0.248, that may be departure from the, it may happen in the statistic. That's why we cannot rely on the direct number every time. Just remember this point. ये नहीं कहेंगे तो तीन माइनस तीन से छोटा है ये वैल्यू
-3 से कम है तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं। रेंज सीधा सीधा नंबर पर हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि -3.5 है तो इसको कह देंगे कि डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री है, और 0.24 मैं कह रहा हूँ तो उल्टा भी हो सकता है कि -3.5 वाला केस आपका सिमेट्रिक हो सकता है, बट -2.48 वाला केस आपका नॉन सिमेट्रिक या नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है। क्लियर? तो सीधा नंबर से कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, वी विल फर्दर एक्सप्लोर द थिंग्स। इस केस को, इस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए क्या, लेटर हम देखते हैं कि आगे चल के क्या आएगा, उसमें भी नेक्स्ट प्रूव करेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ सेम थिंग विद द कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या है? इट टॉक्स अबाउट द फ्लैटनेस। फ्लैटनेस यदि कर्व तीन तरीके की चीजें होती हैं, एक बिल्कुल हाई पीक, एक सेंटर, एक इसकी लो पीक। ठीक, एक लो पीक, एक सेंटर कह लीजिए जिसको मेसोकर्टिक बोलते हैं, एक हाई पीक। अब मेरे यदि इस तरीके का कर्व है, यदि मैं इस तरीके से आप देखें, तीनों सिमेट्रिक है। जस्ट रिमेंबर द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट तीनों सिमेट्रिक है। ये मान लीजिए कि पीक है, ये मेरे हैंड को मिले हुए, इस पीक पर आपके, इस पीक से आपके क्या आना है, यदि सेंटर से मिलाए तो तीनों पॉइंट्स आपके मीन मीडियन पॉइंट कंसाइड कर रहे हैं। इसकी हाइट यहां तक है, सेकंड की हाइट ये है, सिमेट्रिक है वो भी। यदि तीनों को मैं ऐसे मिलाऊंगा देन यू विल सी, so there's some online participants also there, so I think they will not be able to see my next section. So assume that all the points are symmetric, मतलब थोड़ा सा ये तीनों के मीन मीडियन पॉइंट आर कंसाइडिंग एट दिस पॉइंट। यहाँ पर one important point about the symmetric distribution is that mean, median and mode will be same. And the distribution is symmetric, data is symmetric, then mean, median, mode will be same only. Now assume that this is the peak of this particular graph, this is the peak of this particular graph, and this is the peak of this particular graph, and all the three graphs are symmetric. इस केस में आपको नहीं लगे तो ड्राइंग पर मत जाइए, क्योंकि थोड़ा हैंड मेरा ज्यादा ड्राइंग में अच्छा नहीं है। थिंक अबाउट इट, पॉइंट इज दैट तीनों तीन डेटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक डेटा जिसमें आपकी हाई पीक है, जो पर्टिकुलरली आपका, इसकी बात करूंगा। दूसरा आपका, दिस इज सेकंड, इट इज फर्स्ट, एंड इट इज माय थर्ड। इसमें हाई पीक है। पीक से क्या मतलब है आपका? What I mean by the high peak? What are you understanding by the high peak? Just think about the spread of the data points. This is the center of your point data because it is the mean. And what is this? This is the spread of the points. ये पॉइंट्स कहां तक है? ये सिर्फ यहां तक स्प्रेड कर रहे हैं, या इस पॉइंट से यहां तक जा रहे हैं। फर्स्ट के केस में बात कर रहे हैं। सेकंड के केस में आप देखेंगे पॉइंट्स कितना है, और ज्यादा दूर होते जा रहे हैं यहां पर। थर्ड का थोड़ा सा गड़बड़ बनाए ग्राफ, थर्ड वाला बिल्कुल एकदम नीचे नीचे होगा ऐसे कर, और इन तीनों को ओवरलैप कर। So that means in the third one, the lower one actually we have the maximum spread. पॉइंट्स क्या है? मीन से बहुत दूर दूर है। The last one, that is the top one, we call it is the leptocurtic. Upper one, that is the one, is called the leptocurtic. Second one is mesocurtic. The last one is the pletocurtic. Is it clear? Now go to the spaces output and think about all the output. This output, this is saying that the value is 1.06. So again,
Actually, this is value compared with the beta 2 minus 3. But in SPSS, by default subtracting. So again, as in the case of SQNet, we again compare with the 0. 0 means middle one, mesocartic. Greater than 0 means lactocartic tail. And less than 0 means over tail, that is lactocartic. Is it clear? So in this case, you can see that value is 1.062. So we can say that it is lactocartic. And in the second one, again we have the kind of mesocartic. Second one, mesocartic means exactly normal. तो normal तो तीनों है वो, but science actually talks about this. Straightness talks about how the observations are spread with respect to the center or with respect to the mean. मीन से वो वैल्यूज कितनी दूर दूर है, is it clear? Then again the minimum and maximum and the sum of the observation, and range will be maximum minus minimum, you can calculate. Is there any doubt? Zero के level पर. If it is equal to 0, then it is mesocartic. If it is greater than 0, lactocartic. If it is less than 0, plato. Is it clear? Now go move to next. Go to the second one. Descriptive. You can also use the same variable over here and just go to the option. All the same options are there. So you have the minimum, maximum, variance, range, discordancy, skewness. All the same things is there. Just you can click. Very quickly we do it. Let's see. In this case, just we change the display of the output. Display of the output. अभी आपका कॉलम इस तरीके से बन करके आ रहा था, आपका कॉलम फ्लैट आ गया है. But if you compare the numbers, compare the mean, compare the standard deviation, compare the variance, you will get the. Either you can use frequencies to calculate all these things, or you can use descriptive to calculate all these things. But the main point is that in case of skewness, in case of kurtosis, you are getting the standard error. Standard error over here. But in case of this one, you have also the standard error of skewness, standard error of kurtosis. So this standard error of skewness and this standard error of kurtosis talks about the again the spreadness. कि कितनी जितनी स्टैंडर्ड एरर आपकी कम होगी उसका उतना ही मतलब है कि जितना आपका वेरिएबिलिटी आपकी उतनी ही कम है. अब आपका मुझसे जब मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड एरर के बारे में बताया तो आपने कहा कि मीन की स्टैंडर्ड एरर तो आपने बता दिया कि कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? अलग अलग सैंपल्स लिए और उनका मीन निकाला और कितने मीन्स हुए उनका सबका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर दिया. दैट इज द वन थिंग. बट हमेशा तो ये नहीं होता. एक बार डेटा कलेक्ट करना मुश्किल होता है, क्या 30 बार डेटा कलेक्ट करने जाओ? सो इन दैट केस, जैसे इस केस में हमारा नाउ ओनली वी हैव द वन डेटा सेट, रिपीट डेटा सेट तो नहीं है, या अगेन अगेन हमने डेटा तो नहीं लिया है. हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड एरर इन दिस केस? वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर फॉर द सैंपल यूजिंग द फॉर्मूलाज. एज आई टोल्ड यू, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन इज सिग्मा बाय रूट n. So in this case, sigma was standard deviation 2.936 divided by square root of 2, number of observations. If you talk about the skewness of the skewness, standard error of the skewness, if you want to write down the formula, you can write down 6 square root of 6. Although there is no need to explain this thing, but
formula of the standard error of skewness. Otherwise, the second method, just calculate the skewness for each sample and then calculate the standard deviation based on the statistic. स्क्यूनेस आपने S1 मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि स्क्यूनेस आपने S1 एक डेटा कर लिया, फिर दूसरे डेटा का स्क्यूनेस निकाला, फिर तीसरा डेटा लिया उसका स्क्यूनेस, फिर चौथा डेटा लिया उसका स्क्यूनेस, एंड देन यू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्क्यूनेस. इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ skewness. Same thing for the kurtosis. But we will also have the formula, but I am not going to detail in that. Now, as I told you, same thing. I just want to know that the mothers which do smoke or which do not smoke. Based on मदर्स स्मोक करते हैं और नहीं करते हैं, उनके साथ साथ ये सारा एनालिसिस कैसे करेंगे. अरे गेटिंग माय पॉइंट और नोट. अब आपको ये कहा कि अब आपके केस में जैसे मान लीजिए कि इसमें आपने दोनों वेरिएबल्स लिए हुए थे, दोनों वेरिएबल को कंसीडर इसलिए कर लेना क्योंकि दोनों वेरिएबल से आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है. अब जस्ट सी दिस. ये इतने स्टैटिस्टिक्स आपने कैलकुलेट किए हैं. जस्ट यू वांट टू नो ऑल द स्टैटिस्टिक्स फॉर मदर्स जो स्मोक करते हैं और जो स्मोक नहीं. हाउ विल यू डू इट? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू. सो मुश्किल है, करना तो है ना. जो क्वेश्चन आप मुझसे कह रहे थे कि सर हम एवरेज लेंथ देख सकते हैं जो मदर स्मोक करती हैं, जो मदर स्मोक नहीं करती हैं, या एवरेज बर्थ रेट देख सकते हैं जो मदर स्मोक करते हैं, जो मदर स्मोक नहीं करते हैं, या एज 35 के रेस्पेक्ट से भी हम चीजें देख सकते हैं. ये भी नॉमिनल वेरिएबल देख सकते हैं. ऑल टुगेदर यदि आपके पास इनकम का डेटा है तो आपने टोटल इनकम देख ली पूरी पॉपुलेशन की कितनी है. दैट इनकम यू कैन चेक बाय बेस्ड ऑन द मेल एंड फीमेल, based on their place, सोलर होगा तो अलग अलग चेक कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे उसे? For that, just you can go for data and transform data. In data, go to split file. Data, go split file. Just click here. Split file. स्प्लिट किसके रेस्पेक्ट में करना है? ऑर्गेनाइज ऑन बाय ग्रुप्स. और ग्रुप वेरिएबल क्या ले रहे हैं आप लोग? ग्रुप वेरिएबल क्या ले रहे हैं आप लोग? स्मोकर. जस्ट पुट दैट वेरिएबल. Okay. Now you will see there is no change in your style actually, but or either you can see this thing, but you will not see any change in your data set or in your file. But you can see one thing over here at the top down. This one. Just see over this one. Top down corner, right side. Is split by smoker. Which means your file is split. Is it clear? Then just use the same analysis, descriptives, then just all the statistics which I have already selected, they click. Let's see output. This is the output for non-smokers, and this is the output for smokers. Is it clear?
Is it clear? For this, just go to data. For the splitting the file, just go to data, go to split file. Then just click on organize output by groups. Organize output by groups. Now we can use the other any categorical variable, say whether a low weight, वेट लो है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम एवरेज लेंथ और एवरेज वेट की बात कर रहे हैं, या जो भी वेरिएबल आप लेना चाह रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस ले रहे हैं, फादर एज का ले रहे हैं, मदर एज ले रहे हैं, जो भी लेना, यू कैन कंसीडर एनी वेट. Suppose I am considering here mother is greater than 35. मदर एज ग्रेटर देन 35 होने से लेंथ पर या उसके पूरे लेंथ वाले वेरिएबल पर वो वेट के वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एज 35 अबव होने से और 35 बिलो होने से. जस्ट सी, एनालाइज, देन descriptive statistic, descriptive, then figure. Now you can compare length of baby. So in this case you can see that we have mother which has age greater than 35. No, that means age is less than 35, means only 38, and age whose age is greater than 35 we have only. Okay, just see the average. Mother's age is greater than 35, the baby length is 52.50, and mother's age is less than 35, average length of the baby is 51. Is it clear? That means you can draw one conclusion from here. If the mother age is higher, then baby length is higher or down. You can say this. This is the one conclusion that you can draw from this one. Similarly, from the other one,
इज इट क्लियर? तो जानना चाह रहे हैं आगे का जो भी एनालिसिस हमें करना है, और वो एनालिसिस कैसा, वो एनालिसिस हमें करेक्ट एनालिसिस करना, सही एनालिसिस करना, ये नहीं कि बस हमारे मन में आया तो इसलिए हम कर बैठेंगे। जब आप कल टी टेस्ट या जो भी पैरामीट्रिक टेस्ट आप पढ़ेंगे, देन यू विल सी देयर आर सम assumptions, यहाँ भी क्या assumption थी, जब आप descriptive statistics की हम बात करते हैं तो your the first assumption is that your variables should be measured on ratio or interval scale, ratio scale मीन किसका कैलकुलेट होगा, क्योंकि जब आपने इंटरवल रेशियो नॉमिनल ऑर्डिनल पढ़े होंगे तो तब कहा होगा कि ऑन द रेशियो स्केल वी कैन यूज ऑल द फोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. Multiplication and division is not used in case of interval scale. एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहां पर होता है. तो जब हम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, स्टिफनेस की बात करते हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन, which means if your data is on ratio scale, then we can use all these kind of statistics, descriptive statistics. Because if your data is not measured, not measured ratio scale, then you cannot calculate all these statistics. For that matter, you can just report the number of frequencies. For that matter, you can just report a chart actually, either by chart or pie chart. Okay. So just we want to know more about the variables. For that, we need to do more thing about, go to analyze, descriptive statistics, come to this, explore. Next command, that is explore. Okay. In that case also, analyze, descriptive statistics, in that go to explore. Okay. Just click on it. Again, we can use both the variables. Okay. Those variables, the variables or one variable at a time, you can consider more variables, you can also consider both variables in this dialog box and click this tab. Length and weight. Again, we are considering the same variable because we have some idea about the values of these two variables. That's why I am using these two variables. Otherwise, I can use other variables also. And just click on statistic. Now, just you need to click descriptive. That is by default this key. Then just click on this M estimator. I am talking. I will come later on. Okay, this M estimator. Just click on M estimator. So just click on two things: descriptive and M estimators. Okay. Then go to float. Next tab. The next option actually. In this, just click on histogram and just click normality plots with test. Normality plots with test. Click on it. Close. Second option, second tab. On this dialog box, the second tab, second option, plots. In plots, click on histogram and click on normality plots with tests. Is it clear? Click OK. Option, there is no need to change any option and there is no need to change at any other place. First time, there is no need to change at any other place. Okay. So we have made three changes actually. One change in statistic, we have clicked an estimator, and in close, we have clicked two places. One is histogram and second one is normality plots with test. Is it clear to all of you? Okay, continue. By default, you can see over here that both is highlighted or both is clicked.
but you can just click on statistics. You can click on close. As I click on close, so you can see my statistics icon is unhighlighted. As I click on statistics, you can see my close icon is not highlighted. As I click on both, my both icons are highlighted. So we want to calculate both things actually. Got it? Then click on OK. Now, this is a very simple table. First table is very simple to all of you, I hope. In this case, just we have only the valid percent and case missing. If you have some missing observation, then he will report here. Otherwise, you can just move ahead. Now come to this point. Now I think all the points in this table is clear to all of you, or some doubt is there. Mean is clear to all of you. What do you mean by the 95% confidence interval for mean? Also, that topic will be discussed tomorrow. Confidence interval. But as I told you, if you repeat the sample, suppose you collect 100 samples again and again, जो मैंने अभी प्रोसीजर आपको बताया, एक साइड से कर दिया, 30 का सेट में ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर रहे थे, तो क्या सबके मीन एक जैसे आएंगे? अलग आएंगे? क्या उनकी रेंज बना सकते हो? जो मीन आएगा उसकी रेंज बना सकते हैं? उस रेंज को यदि मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली सेंस में कह दूं, उसका मतलब ये है, या ये दो वैल्यू आपने निकाली है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द मीन, मैं अभी आपको बता दूंगा कि आप तो कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको एक रफ रेट, आपको एक 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये बता दूं कि आपका जो एवरेज आएगा वो इन दो वैल्यू के बीच आएगा। 95% का क्या मतलब है? यदि आपने 100 मीन कैलकुलेट किए, 100 सैंपल्स लिए, हर सैंपल से मीन कैलकुलेट किया, आउट ऑफ 100, 95 मीन will lie between these two values. 100 में से 95 मीन की जो वैल्यूज होंगी, those will lie between these two. 5 वैल्यू, कोई सी भी 5 वैल्यू, किसी भी बच्चे की 5 वैल्यू, they may be beyond that range. This minimum maximum मतलब lower and upper value जो आपकी है. Is it clear? Is it clear? ये फर्क है, ये मतलब है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। यदि हम अपने उस प्रोसेस को 100 टाइम्स रिपीट करें, 100 मीन्स कैलकुलेट करें, then out of 100 टाइम्स 95 टाइम्स योर मीन विल लाई बिटवीन। अब आपको उस प्रोसेस को कैलकुलेट करते और हमने उसको ऐसे लिया। देयर इज अ साइंटिफिक थ्योरी, देयर इज अ मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस एक्ट, ऑन द बेसिस दैट वी आर कैलकुलेटिंग, जस्ट ऐसे ही किसी के लिए नहीं आ रहा। ओके, the next is 5% trimmed mean. What do you mean by the trimming? Trimmed mean? What do you mean by the trimmed mean? Have you idea of trimmed mean? Trimming को जानते हैं? क्या होती है? कम। डेटा की कटिंग कर दूं। डेटा कटिंग कैसे होती है? डेटा कटिंग कैसे होती है? ऑब्जर्वेशन उड़ा दूं। डेटा की कटिंग का एक साइंटिफिक वे है, ऐसे ही कटिंग, ऐसे ही हमें ट्रिम्ड नहीं करना है। ट्रिमिंग कैसे करनी है? First, you will arrange your data either in ascending or descending order. Okay. And we are talking about the 5% trimmed. In that case, we will remove the 5% observation from the lower side and 5% observation from the upper side. 5% from the lower side and 5% from the upper side. In that case, you are saying this is 5% trimmed. What is the requirement of, what is the role of this trimmed mean? Again, the same thing as respect to the weight. If you have outliers in your data set, तो outliers कहाँ आएंगे? एक्सट्रीम साइड्स होंगे लोअर यहाँ पर, और वो क्या कर दिया आपने?
बट उनको डिलीट कर दिया एक तरीके से, है ना? तो you have calculated the mean for this range, this data set only. After cutting the observation beyond this value, beyond this value. 5%. परसेंट बेस हम कर रहे हैं, नंबर बेस नहीं कर रहे हैं. इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितनी ऑब्जर्वेशन डिलीट करनी है किस पर डिपेंड करेगा, डेटा. नंबर नहीं फिक्स कर रहे, 5% डेटा सेट कर. इज इट क्लियर? अब ये कैसे पता चले कि आउटलायर था कि नहीं था? इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन actual mean, that means the arithmetic mean which we have calculated, and trimmed mean. If there is a difference, and there is a huge difference between arithmetic mean, that is the mean, and trim mean, then you will say that there is some outlier present in your thing. If both are very similar, both are very close, the difference is very narrow or very small, then you will say there is. Is it clear? If there is a difference, a huge difference between arithmetic mean, which is denoted by the mean, and trimmed mean, then you will say some outliers are present, which you have actually deleted. Because you know that arithmetic mean is based on all the observations. And you know also that if you are including some extreme value, the your mean shifted towards that value. It is clear? Mean यदि आपका एक outlier higher side है, तो your mean will be shifted to higher side. Is it clear? So if you cut that value, your mean will be, or the trimmed mean will be. So in this case, actually, you can see that there is not so much difference between mean and between arithmetic mean. So you can say that there is one indication that there is no outlier present in your data. If there is a big difference between a huge difference between this arithmetic mean and trimmed mean, which means there is a no, there is a number of outliers present in your data. इनको डिलीट करने के बाद जो डेटा बचा, ट्रिम्ड मीन से मतलब है कि जो आउटलायर जो आपने 5% डेटा किया है उसमें से करने के बाद जो डेटा बीच का बचा हुआ है उसका मीन. और यदि दोनों मीन में डिफरेंस है, दैट मींस यू आर सेइंग, यू विल से दैट देयर इज सम आउटलायर. और ये दोनों मीन आपके बहुत क्लोज है, देन देयर इज नो आउटलायर. तो मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. One more thing is over there, that is interquartile range. नहीं वो अभी आ जाएगा. देखिए जब आपको डिफरेंस भी पता चल जाता है, आउटलायर्स भी हम चेक करेंगे कि वो आउटलायर्स है कि नहीं है. सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स में एक स्टैटिस्टिक या एक टूल की वजह से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं करते. जब आपको तबीयत खराब होती है या फीवर ही हो गया तो डॉक्टर कितने सारे टेस्ट लिखता है. आरसीडी आरबीसी करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, उसके बाद दवाई देता है. एक आध दवाई देगी, हेडेक या फीवर ज्यादा तो एक टेबलेट दे देगा, मतलब पहले टेस्ट कराइए उसके बाद आइए तब बात करेंगे. सेम थिंग विद द डेटा. पहले हम एक स्टेटिस्टिक्स लगा करके ये देख सकते हैं कि इस तरीके की चीजें हैं. उसके बाद यदि हम उसको शेयर कब करेंगे, वो अपनी मेडिसिन कब फाइनल करेगा, रिपोर्ट के बाद ना. तो सिर्फ हम अपना डिसीजन कब लेंगे, जब हम और बहुत सारी चीजें देख लेंगे. अभी हमने सिर्फ बात की कि ट्रिम मतलब ट्रिम्ड हमने करके देख लिया, मीन में डिफरेंस नहीं है तो हमने डिसाइड कर लिया. यदि आपको फिर लग रहा है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि हो सकता है कि 0.5 का डिफरेंस है, 0.3 का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 5.0 का डिफरेंस नहीं भी हो सकता. उसको भी टेस्ट करने के तरीके. इंटर क्वार्टाइल इज Q3 माइनस Q1, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल. And again the same thing is repeated for this particular question. Now suppose there is a big difference, there is a huge difference between the trimmed mean and arithmetic mean. Then, which means it is an indication that there are some outliers are present in your data set. So what can you do in that case? In that case, if you report the arithmetic mean, it is a wrong thing. If you know some outliers are present in your data, and again, if you are reporting that means you are doing something wrong.
So what can you do? In that case, you can report M estimators, because M estimators are more robust in case when some outliers are present in your M estimators are useful only when they are more robust when outliers are present in your outliers नहीं है अर्थमेटिक मीन से बढ़िया कोई चीज आउटलायर्स है तो अर्थमेटिक मीन को रिपोर्ट नहीं करना देन वी नीड टू रिपोर्ट दिस बिकॉज दीज एम एस्टिमेटर्स आर मोर robust ज्यादा अच्छे इट इज क्लियर in that case we have given the four you can use any one but generally we use key by weight mostly popular is the key by weight but you can use all these so these are based on the certain order statistics and all other things actually are involved in this that's all the thing all the all the statistics are giving the different values so don't worry about that you can report anything but generally the people use the key by is it clear now टेस्ट ऑफ द नॉर्मलिटी इसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में स्किनेस वाज 0.2 -0.2 in a one case in other case it was -0.056 so we have the two tests which we use for generally for the normality test one is the Colmogorov and second one is the both test the Shapiro-Wilk test I will explain first Shapiro-Wilk test is a parametric test and you know that parametric tests are more powerful करेक्ट नॉन पैरामेट्रिक भी नहीं है उनकी पावर पैरामेट्रिक के मुकाबले थोड़ी सी गलत नहीं है सो वी ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई दी पैरामेट्रिक टेस्ट जब भी हम जल्दी से टी टेस्ट या अनोवा लगाने की कोशिश करते हैं कि टी टेस्ट और अनोवा लगा दो क्यों उसके रिजल्ट को हम अच्छा मान रिजल्ट अच्छे नहीं है यदि आपके एजम्पशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे the one assumption is where this Shapiro-Wilk test, if you have less than 50 observations in your data set, less than 50 observations in your data set, then just go for this Shapiro-Wilk test. But it does not mean that you cannot choose Shapiro-Wilk for higher than the 50 observations. You can also use Shapiro-Wilk for the more than 50 observations. But again, you have to check some other. उनके लिए कुछ आपको और देखना होगा कि वो नॉर्मलिटी को आपकी कोई ये बताने के लिए कि ये आपकी जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो मोर पावरफुल है तो जनरली लोग प्रीफर करते हैं सपीरो बट सपीरो विल्क जो मोस्टली रिकमेंडेड है मोस्टली एडवाइजेबल है किस केस में व्हेन यू हैव द लेस देन 50 if you are greater than 50 observations just directly go for the case test so case test आपका सिर्फ normal Shapiro Wilk basically test है that used only for the testing of the normality सर केस टेस्ट नॉर्मलिटी के लिए नहीं दूसरे टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है दैट मींस case test is a type of non-parametric test and we should use if you have the more than 50 observations if you have less than 50 per observation then go for the but SPSS again by default will give you as in case of valid and valid and percent case अब डिसीजन क्या लेना है टेस्ट की बात कर रहे हैं when you are talking about the test then you will always have the null hypothesis. What is the null hypothesis? Data is normally distributed. It is the null hypothesis in this case. Data is normally distributed. How will you decide again whether this data is normally distributed or not? So first we will decide कि टेस्ट कौन सा लेना है टेस्ट किससे डिसाइड होगा इट विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 42 है डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है उतनी हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं ओके सो 42 ऑब्जर्वेशन है एंड एसआईजी वैल्यू जो आपकी है दिस एसआईजी वैल्यू इट इज कॉल्ड पी वैल्यू एसआईजी वैल्यू मींस पी वैल्यू if this p value is less than
0.05, less than 0.05, you will reject the null hypothesis. If Sij value is less than 0.05, you will reject the null hypothesis. Just underline this statement. P value or Sij value less than 0.05, reject null hypothesis. Otherwise, vice versa. Greater than, accept H0. Is it clear? So in this case, what is the P value? I'm not going to how to calculate P value, what is the role of P value. I'm not going too much detail about this concept due to the shortage of time. Okay. So what is this one? Sij value is less than 0.05, which means null hypothesis, it is less than 0.05. 0.054 0.05 से छोटा है, बड़ा है, which means you will accept the null hypothesis. And null hypothesis क्या थी? Data is normally distributed. So we will confirm the statement from this test. Your data is normally distributed. Is it clear? Same thing we can also check. The normality can also be assessed by the histogram. Normality can also be assessed by the histogram. If you go to element, if you double click on this diagram, on this chart actually, if you double click on it, then just go to element and just click on show distribution graph. So he is asking about other distribution. Just you have to go with the normal and just by default it is showing the normal. If you are seeing that all the area is covered by this graph actually, and you are saying that this graph is kind of symmetry, then you will say data is normally distributed. Let's again check it. टेस्ट से तुम्हारा कंफर्म हो गया, टेस्ट के बाद जरूरत नहीं है, बट बिफोर टेस्ट जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स with the help of the graphs. You can also tell about whether data is normally distributed or not. I think Ronnie will also talk about the box plot for the normal. One more test, one more graph is there. Normal QQ plot. Normal QQ plot. This is the standard normal plot, standard normal diagram or normal plot. You can say that the black line, and this is the expected, and this is the observed points. तो ये आपके डेटा के हैं और ये आपका expected था. If all the points are aligned with this black line, then you will say that data is normally distributed. In this case, you can also see, but you can see that the one point is one point is above this point, above this line, and this particular point is below this line. So because we have only the one point, so that means we actually confirm from the test. But in some cases, if you talk about the initial state, sometimes we may have the confusion whether it is normally distributed or not. But our confirmation always comes from the test. नंबर से कुछ नहीं आना, ग्राफ से जस्ट आइडिया लगेगा, नंबर से आइडिया लगेगा, बट दिस इज द कंफर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट. अगेन ये सब उसी में आगे की तरफ है, नीचे एक्स नोड में ही नीचे सारे आउटपुट्स है. अगेन द ट्रेंडेड नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट इज अगेन द सेम प्लॉट, अगेन एक्सप्लेन द सेम थिंग. एक्चुअली जितना भी ये एक्स नोड का पार्ट आपका एक्सपीरियंस है, तो विल टॉक्स अबाउट द नॉर्मलिटी ऑफ द डेटा. फिर चेक द नॉर्मलिटी ऑफ द डेटा. नॉर्मलिटी को चेक करने के, नॉर्मलिटी को देखने के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो ग्राफिकल है, चाहे वो टेस्ट के थ्रू, वो सब प्रोसीजर आपको इसमें मिलता है. इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आपको दे रहा है और डिफरेंट डिफरेंट आपको टेस्ट भी उसमें दे दिया और सारा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसमें. अगेन द सेम थिंग इज हियर. यदि आपके ये पॉइंट्स भी स्ट्रेट लाइन के क्लोज है, देन मींस ये आपकी अगेन एक्सपेक्टेड लाइन.
ये एक्सपेक्टेड लाइन और ये आपके ऑब्जर्व पॉइंट्स। ये एक्चुअली प्लॉट क्या कर रहा है, इट इज प्लॉटिंग ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए और जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है उसके डिफरेंस को यहाँ पर प्लॉट कर रहा है। तो वी ऑलवेज से यदि पॉइंट्स आपके डायरेक्ट लाइन के नजदीक है दैट मीन्स difference is zero between observed and expected. So we will say data is normally distributed. Again, यदि आपको डिस्टेंस ज्यादा मिल रही है then you will say it is departing from the scenario या नॉर्मलिटी से डिपार्चर। Box load, I think box load has been explained to you or I need to explain it. Box load मैंने बताया था नॉर्मलिटी चेक करने के लिए सेम इंटीग्रेशन यू कैन। Now these are for the second way. Just you do one thing over here. जैसे अभी आपने क्या किया कि मदर के स्मोकर नॉन स्मोकर के रेस्पेक्ट में आपको सारे केसेस बनाने हैं जैसे हमने अभी स्प्लिट फाइल के थ्रू किया था। बट द मेन एडवांटेज ऑफ दिस एक्सप्लोर कमांड इज दैट you have no need to splitting this file. Just go to explore and put this smoker variable into the factor list. Smoker variable into the factor list, and same other things will remain same. Now just see the output. Length of the baby for the non-smoker and for the smoker. Interpretation will remain same. अब नंबर्स आप देखते जाइए उसको इंटरप्रेट करते चले जाइए। बेबी लेंथ, बेबी वेट, नॉन स्मोकर, स्मोकर। लेंथ ऑफ बेबी नॉन स्मोकर के लिए एन एस्टिमेटर, स्मोकर के लिए एन एस्टिमेटर। नॉर्मलिटी टेस्ट स्मोकर के लिए अलग, नॉन स्मोकर के केस में अलग। ठीक, दोनों वेरिएबल्स के सेम थिंग हिस्टोग्राम फॉर द नॉन स्मोकर एंड हिस्टोग्राम फॉर द स्मोकर। सब चीजें वो रिपीट कर देगा। सेम थिंग ही विल गिव यू द बॉक्स लोड फॉर बोथ, बॉक्स लोड फॉर द वेट ऑफ बेबी for the non-smoker and for the smoker. One more thing that you can see in this case, just you want to know. In this case, you can see the two cases. These are the two outliers. 39 case number and 15 case number. If you want to know the label of this particular label with respect to any categorical variable, in इस केस में मदर की एज लेस देन 35 है कि ग्रेटर देन 35? मदर एज लेस देन 35 है कि greater than 35? That means again any kind of nominal variable. And just you can do one last thing. Put that particular nominal variable into the label cases by. Label cases by. And just you will see the change in the output only in the box flow. No change will you see in all the output. You will see a change of the output in the box flow only. This one. Before that, we are getting the number 39 and 15. Now we are getting yes and no. So that means this upper age is this upper value that is 39 belongs to mother age greater than 35, and the lower value belongs to mother age less than 35. Is it clear? Is it clear? If you have any question, then you can ask. Online participants, if you also have some questions and queries, then you can ask. इससे पहले पॉइंट में सिर्फ जो हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट में जाने की जरूरत नहीं है। Just put that nominal variable into the factor list. You will get the same result as in case of split. Splitting फाइल की थी, स्प्लिटिंग फाइल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज put that particular nominal variable into the factor list फाइल ऑफ कोर्स। टोटल केसेस में जिस पर्टिकुलर नॉमिनल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको लेबलिंग करनी हो उसको रख दीजिए, नहीं करनी है तो उसको वहां से
सिर्फ बोथ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट होगा इसका, और ये आपका इट विल सिमिलर टू द स्प्लिटिंग ऑफ द फाइल, कोई अलग फर्क नहीं है दोनों, सिर्फ डिपेंडेंट ऑफ सारी वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स के में न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसके लिए हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं वो डिपेंडेंट तो हो गई, उस पर डिपेंडेंट मानते हैं। फैक्टर उसको मानता है कि जब हमारे पास कोई नॉमिनल वेरिएबल को जब हमने स्प्लिटिंग की थी कि अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से पूरा एनालिसिस किस तरीके से होगा, तो वी विल यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इनटू द